All right. So this is about section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code. Brief review of how 29A works and what are the problems with it. So let's begin. This is section 29A of the IBC. Essentially, it is a section that tells you who is eligible to submit a resolution plan in a corporate insolvency resolution process, or CIRP as they call it. Essentially, it does not define eligibility as much as it defines ineligibility. आप 29A पढ़ेंगे, पढ़ते ही first thing you read is a person shall not be eligible to submit a resolution plan if, और फिर वो 10 reasons दे देता है कि if what and what and what. What it says is कि अगर आप एक undischarged insolvent हैं, या आप एक willful defaulter हैं, या आपने कंपनी अपनी NPA करके रखी है, या फिर आप imprisoned हैं, etc etc, तो आप एक रेजोल्यूशन प्लान नहीं दे सकते किसी भी इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए. फेयर. Along with that, it gives one section which is very interesting, for which 29A has been very controversial. Has a connected person not eligible? तो 29A में जो भी restrictions हैं A, B, C, D, E, I तक, उन सबके connected persons भी resolution plan नहीं submit कर सकते. What is a connected person? A person who is promoter or in the management or control of the resolution applicant. Fair. आप as a individual, आप as a company resolution plan नहीं दे सकते, तो आपके management भी नहीं दे सकते. A person who shall be the promoter or in management of the corporate debtor. Again implying the same thing. तो 29A का intention बड़ा clear है कि अगर A से I तक के लोग resolution plan नहीं submit कर सकते, तो वो किसी भी आर्टिफिशियल एंटिटी के थ्रू रेजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट कर सकते. 3 भी सेम चीज बोलता है, द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी एक्सेट्रा फॉर अ पर्सन रेफर टू 1 and 2. एसेंशियली अगर आप 29A के A से I में रेस्ट्रिक्टेड हो, तो आप किसी भी एंटिटी के थ्रू, किसी भी कॉर्पोरेट मैकेनिज्म में एक नई कंपनी खोल के या पुरानी कंपनी छोड़ करके एक नई कंपनी बना के, या अपनी कंपनी की सब्सिडियरी में या होल्डिंग कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में या अपनी वाइफ के थ्रू ये काम नहीं कर सकते. फेयर एनफ. यहां पर आपको 2 जगह पर एग्जेम्पशंस मिलते हैं. फर्स्ट थिंग, अगर आपने एक इंसॉल्वेंट कंपनी अक्वायर करी है ड्यू टू विच you fall under 29A, then you are exempt from the provisions of 29A. For example, 29A में एक restriction है कि अगर आपकी कंपनी NPA है for more than a year, तो आप resolution plan नहीं submit कर सकते. Fair enough. बट मान लीजिए कि मैंने एक इंसॉल्वेंट कंपनी अक्वायर करी. अब सिंस मैंने अभी अक्वायर करी है, वो NPA है, अब मैं एक नई इंसॉल्वेंट कंपनी एक्वायर करने गया, तो जस्ट बिकॉज आई हैव एक्वायर्ड अ कंपनी व्हिच इज NPA, व्हिच बिकम्स माय सब्सिडियरी कंपनी, एंड फॉर दैट रीजन आई कैन नॉट बी डिसअलाउड अंडर 29A टू एक्वायर अनदर इंसॉल्वेंट कंपनी. यार मेरा तो काम ही वही है, वहां पर आप नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते. सेकेंडली, ऑल दीज कंडीशंस आर नॉट अप्लाइड टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 29A में इनएलिजिबल नहीं कर सकते, which brings us to some interesting consequences जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे. तो financial institutions exempt है, and अगर आपने इंसॉल्वेंट कंपनी acquire करी है as a part of your business, तो आप exempt है from the provisions of 29A to submit a resolution plan. 29A had come in November 2017. Simultaneously when 29A came, liquidation के regulations भी amend करे गए, to the extent कि any person not eligible to submit a resolution plan will also not be eligible to buy the assets of the corporate debtor, which is fair. कि अगर आप 29A में अपनी कंपनी नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप ये नहीं वेट करोगे कि वो लिक्विडेशन में चली जाए और फिर उसको खरीद लो. नहीं, अगर आप रेजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट कर सकते, तो आप लिक्विडेशन में भी अकाउंट नहीं परचेज कर सकते. फाइन. There is a third way in which companies are resolved under IBC, that is the scheme of compromise and arrangement as a part of the liquidation process. For a long period, there was a debate कि should 29A be extended to the scheme of compromise and arrangement. Insolvency Law Committee से report ली गई. Out of 108 members, 105 members opined कि 29A is a very restrictive
provision and it should not be extended to compromise and arrangement. Then in October 2019, NCLAT took the view that all the three mechanisms of disposing of a company in IBC, resolution, liquidation, compromise, arrangement, पे 29 applicable रहेगा. This was challenged before the Supreme Court, and in March 2021, the Supreme Court gave a judgment that the judgment of the NCLAT was valid, and in all three methods of disposal or resolution or compromise, 29A will be applicable. Now we need to discuss what are the problems with 29A. So we're going to discuss three problems related to 29A. First thing, how far does this definition of connected person go? And the best way to understand this problem is the problem of Ruchi Soya. Ruchi Soya में क्या हुआ? अदानी विल्मार ने रुचि सोया के लिए रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करा. It was a high valued resolution plan. The COC approved the resolution plan in June 2018. 270 दिन बीत चुके हैं, ये CIRP खत्म होने पे है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मिल गया है, COC ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया है. नाउ पतंजलि comes in. It says that even though 270 days are over, but Adani Wilmar is not eligible to submit a resolution plan. क्यों? क्योंकि अदानी विल्मार का MD प्रणव अदानी के फादर इन लॉ विनोद कोठारी की कंपनी रोटोमैक was NPA. And on the basis of that, Rotomac's connected person, Adani Wilmar, is not eligible to submit a resolution plan. Instead, Patanjali gave its own plan to safeguard the interest of the creditors कि आप मेरा plan दीजिए. And Patanjali went to court. उन लोगों ने NCLT में application file कर दी कि Adani Wilmar is not eligible to submit a resolution plan, then do not allow it to submit a resolution plan. Now, when a person applies to submit a resolution plan, he has to hold some money in the form of a EMD, and then eventually आपको invest करना है तो आप पैसा साइड करके रखते हैं. अब ये प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, 6 महीने बीत गए, कोर्ट रिजल्ट नहीं दे पा रहा बिकॉज कोर्ट टाइम की परवाह नहीं करते. अल्टीमेटली दे फ्रस्ट्रेटेड अदानी विल्मार आउट. जनवरी 2019 में अदानी ने अपना रेजोल्यूशन प्लान वापस ले लिया. उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, हमको रुचि सोया के लिए अप्लाई करना ही नहीं है, वी डोंट केयर व्हाट हैपेंस. Then Patanjali became the sole bidder and, as history knows it, took Ruchi Soya away. In this process, you're creating an atmosphere when people are afraid to come in as resolution applicants because उनको नहीं पता है कि कोर्ट कितने दिन में डिसीजन लेगा and उनको कितने दिन तक वो पैसा होल्ड करके रखना पड़ता है. For any investor, time is money. Second problem with 29A is that essentially it is a restrictive section, and you have to understand that in a free market economy, whenever you put in a restrictive clause for anything, it only increases costs. लोग काम करने का तरीका ढूंढ लेंगे. It will increase transaction costs, it will increase corruption costs, but eventually people will find a way to do what they wanted. For example, जैसे ही ये 29A लाया क्यों गया था? 29A लाया गया था बिकॉज काफी सारी ये NPA अकाउंट्स के प्रमोटर्स जो कि पैसे नहीं दे पा रहे थे, दे डिसाइडेड कि यार कंपनी को इंसॉल्वेंसी में लेके जाते. इंसॉल्वेंसी वाज लाइक अ वॉशिंग मशीन कि हम अपनी ही कंपनी के लिए एक रेजोल्यूशन प्लान दे देंगे, वी विल राइट ऑफ द अमाउंट और लिक्विडेशन वैल्यू पे कंपनी को वापस से खरीद लेंगे. 29A पुट एन एंड टू दैट. बट फिर वो प्रमोटर्स क्या करने लगे? वो प्रमोटर्स एक ARC पकड़ते थे, उस ARC में फंड इन्फ्यूज करते थे. वो ARC रेजोल्यूशन प्लान देती थी बिकॉज ARC का तो काम ही होता है रेजोल्यूशन करना. ARC रेजोल्यूशन प्लान देती थी. इफेक्चुअली ये सारा का सारा पैसा ARC के थ्रू रूट होने लगा और काम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था. दिस एंटायर ट्रांजैक्शन हैड अ कॉस्ट. ARC इस चीज में अपनी एक फीस लेगी. वो फीस वहां से जाने लगी जो रिकवरी आनी चाहिए थी COC को, क्रेडिटर्स को, देश की इकोनॉमी को. If you're putting a dead weight loss on a process, then it is reducing the efficiency of the process. That is what started happening. Second thing what happened was
there became this entire ecosystem of websites and companies and advisors and consultants जिनका काम हो गया कि हम 29A की चेकिंग करके देंगे. 4 पेज लंबा क्लॉज है, including checking of all the connected persons. It is not possible for a resolution professional to check each and every clause of 29A. तो इसके पीछे कंपनीज खुल गए जिनका फुल टाइम जॉब बन गया कि हम 29A का आपको चेकिंग करके देंगे, बट दे डू नॉट टेक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ही रहेगी. So even after paying such a cost, there is no guarantee that the resolution professional is still saved. And regardless of that, this is another deadweight loss cost. And again, this will be paid from the pockets of the COC. जो पैसा COC को मिलना चाहिए था या जो पैसा क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए था, क्लेमेंट्स को मिलना चाहिए था, वो अब उनको नहीं मिलेगा because transaction costs बढ़ा दिए because of 29A. Third and final problem with 29A is you are contemplating a creditor in control model. Now, there is no problem with a creditor in control model except your creditor in control model envisages that debtor will be kicked out of the model. That is wrong. आप debtor को जैसे ही picture से निकाल देते हो, it becomes very difficult to revive the company. India is a place of small family businesses. तो लोगों ने 30 साल 2 जनरेशन से अपना अपना बिजनेस बनाया होता है. It is very difficult for a new person to be able to come in and retain that business. Simply does not happen. वो asset के भाव ले जाएगा. This problem is very tangible and evident in the process. कितने ही 19(2) के applications, that is non-cooperation applications from the ये corporate debtor. RBI ने एक स्कीम निकाली थी strategic debt restructuring which failed miserably, which essentially had the same idea कि हम लोग existing debtor को पावर से निकाल के किसी और के हाथ में कंपनी दे देंगे, वो चलाएगा. Failed miserably, did not happen. उसके बदले IBC लाया गया and then IBC में 29A ला करके we have created the same problem all over again with a very similar thought process. With this idea, MSMEs के लिए certain provisions of 29A, certain very restricted provisions of 29A were lifted. कि MSMEs को उनके promoters ही चला पाएंगे. तो as long as the promoter is not a criminal and as long as he is not an willful defaulter and as long as he is eligible under the Companies Act and under SEBI, let him give a resolution plan. And that was kind of a revival for MSMEs in IBC, which was a very good relaxation. The same, however, has not been extended for larger companies. Now think about this. अगर एक छोटी कंपनी को चलाने के लिए आप उसके प्रमोटर्स की हेल्प लग रही है, a larger company is much more complex. One could argue that the larger company is also much more organized. But again, we see कि बहुत बड़ी कंपनीज के रेजोल्यूशन कितने ही हुए. As long as आपके पास एक फिक्स्ड एसेट बेस था जो कि टैंजिबल था, मेजरेबल था, तो उसको खरीदने लोग आ गए. But for a company, let's say like Alok Industries, one of the dirty dozen, resolution 9%, yeah, recovery 9%. So the idea of kicking out the debtor entirely, अगर वो criminal है या वो willful defaulter है या वो barred है under any other law, then by all means kick him out. But simply restricting the debtor from submitting a resolution plan because he has been NPA for a year, जो कि हर debtor होगा इस केस में, does not make sense. That is basically saying कि आपने ये कंपनी डुबा दी. Yes, हम और किसी से 100 रुपए पे 20 रुपए ले लेंगे, बट हम आपसे 40 रुपए नहीं लेंगे to save your own company. And those are the 3 problems with section 29A. Thank you.